This is All India Radio. Welcome to the business news program Money Matters. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार, बिजनेस न्यूज मनी मैटर्स में आपका स्वागत है। इसमें हम शेयर बाजार, कारोबार और अर्थ जगत के ताजा समाचार पेश करेंगे। First, the headlines. Foreign investors pull out over 7,000 crore rupees from the Indian capital markets in the first 2 weeks of March. 5 companies to launch their IPOs next week, and Brent crude oil prices end flat near $70 after touching 13-month high earlier this week. इस महीने के पहले 2 महीनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों से 7,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने 1 मार्च से 13 मार्च के बीच इक्विटी से 531 करोड़ रुपए और डेट मार्केट से 6,482 करोड़ रुपए निकाले। इस तरह कुल 7,013 करोड़ रुपए की धनराशि निकाली गई। इसके विपरीत एफपीआई ने भारतीय पूंजी बाजारों से जनवरी में 14,649 करोड़ रुपए और फरवरी में 23,663 करोड़ रुपए का निवेश किया था। Yamini, what do you have to say about the foreign portfolio investors taking out money and in the coming days, how do you see them behaving? Will the liquidity be affected if they continue to take out the money? And before that, let me officially welcome you to Money Matters. Thank you so much, Rajesh. Well, I think the FPI has been primarily withdrawing money because of honest profit booking and because of the U.S. Bond yields being at highest levels. So automatically, both of them have been affecting the FII movements in the stock markets. Primarily, the stock markets have been at a very high level, and that has been one of the reasons why many people have been booking profits. Okay, yesterday the Niti Aayog CEO Amitabh Kant said that private sector needs to be brought in at the heart of India's economic growth. What do you have to say about, do you agree with what the Niti Aayog CEO is saying? Well, I think, yes, it has been a long ongoing process where privatization has been a process and part in bringing the economic prosperity into the economy. We have been able to overcome the vicious circle of low economic growth primarily because there were a lot of reforms in terms of liberalization, privatization and globalization. Also, the financial reforms which were brought about, we did see that there have been growth. Further, the strengthening of the reforms which have been going on in the past, like digitalization, GST, and the others, together with privatization, can bring about the requisite push in giving us a high growth rate. यामिनी, कोविड-19 से काफी हद तक देश बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी और क्या-क्या करने की जरूरत है जिससे जो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये सस्टेन तरीके से आगे बढ़े और निवेश का भी माहौल बना रहे? जी देखिए, एक तो काफी अच्छा फिस्कल स्टिमुलस ऑलरेडी गिवन है, क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है, लो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जिसके तहत अगर हम देखें मार्केट्स में लिक्विडिटी भी मेंटेन्ड है। निवेश करने के लिए काफी हद तक एनवायरनमेंट भी बहुत पॉजिटिव है। काफी सारे लॉज और कंप्लायंसेस को जो है डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है इनकरेजमेंट मिले, चाहे वो स्टार्टअप्स हों, मुद्रा योजना के द्वारा, स्टैंड अप इंडिया के द्वारा, या आपके एफआईआईज को इनवाइट करना हो, एफडीआईज को इनवाइट करना हो, इन सभी के द्वारा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है और इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है जिससे जो प्लेयर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में आए और निवेश करें। देखा जा रहा है कि कॉर्पोरेट टैक्सेस को भी रैशनलाइज कर दिया गया था, खासतौर पे एमएसएमईज के लेवल पर, तो वो भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर था। टैक्सेस को भी ज्यादा से ज्यादा रैशनलाइज किया जा चुका है, चाहे तो वो जीएसटी के द्वारा हो या इंडिविजुअल टैक्सेशन में हो। तो ओवरऑल इकोसिस्टम्स कंप्लायंसेस को लेकर के, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को लेकर के एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में है।
गवर्नमेंट फर्दर एनकरेज कर रही है प्राइवेटाइजेशन बाकी सभी सेक्टर्स में अगर आप देखें तो ये सभी एक बहुत पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स देते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट्स के लिए. Okay, is self-reliant India all about protectionism, or is it about penetrating global markets? Well, self-reliant in India was never about protectionism. It is about making India stronger in terms of whatever are its strengths, as well as, removing the weaknesses that existed. We have been a promoter of the services sector, and we have seen a lot of exports in services, but we did not see much, development as China has grown into the manufacturing sector. And there is a need to be given to the, a push to be given to the manufacturing sector by reducing the cost of production, by providing a good infrastructure, whether it's through airports, ports, your railways, or through good road transports, an regulatory environment which reduces the compliances cost, gives the requisite credit, and further like that. So when we talk about a self-reliant India, it's an India which boosts the manufacturing sector, boosts the agriculture sector through the reforms which are being brought about, and gives India a position to be self-sufficient in every particular aspect. And then if you want imports or we want others to come in and participate in our economic growth and prosperity, they are welcome to participate in that. यामिनी, अगर हम सनराइज सेक्टर्स की बात करें तो क्या आप ये बताना चाहेंगे कि इस सेक्टर्स में की इम्पोर्टेंस कितनी है, हमारी जो ग्रोथ है और जो कमिंग डिकेड्स है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन ये सनराइज सेक्टर करेगा? जी, सनराइज सेक्टर्स की काफी कंट्रीब्यूशन रहेगी और कोशिश की जा रही है कि इसमें काफी ज्यादा निवेश हो. इनकी कंट्रीब्यूशन को लगातार बढ़ाने के लिए काफी सारे जो है तर्ज पर कार्य करे जा रहे हैं. जैसे मैंने आपको कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा जा रहा है, कोशिश की जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी और बाकी एनर्जी सोर्सेज को डेवलप करने की. इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर सर्विसेज में वाटर, जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो पर्सन टू पर्सन पहुंचे, टू द लीस्ट एडवांटेज पहुंचे, ताकि जितने सेक्टर्स हैं वो एक साथ डेवलप कर सकें. Moving on, riding on the rising market trend, 5 companies will launch their initial public offers, IPOs, next week. The companies are expecting to raise an estimated 3,764 crore rupees with these IPOs. According to the information with the exchanges, Craftsman Automation and Lakshmi Organic Industries will launch their initial share sale programs on Monday, while Kalyan Jewellers India's IPO will open on Tuesday. IPOs of Suryodaya Small Finance Bank and Nazara Technologies will begin on Wednesday. What do you have to say? Is this the growing confidence, Yamini, of the companies and that they are so positive about bringing in their IPOs and the consumer sentiments being in favor to these IPOs? Very briefly, please. Well, true. It is about timing the market, which is at the highest level, showing a greater confidence of the investors in the market as well as the consumers in the recovery process, which does indicate a higher growth rate of about 11.5%. So what you said is perfectly correct on that aspect. Okay, and moving on, the following 7 straight weeks of gains, crude oil prices ended roughly flat this week after prices touched a 13-month high on Monday. Benchmark Brent crude oil prices settled nearly $70 a barrel on Friday, supported by production cuts by major oil producers and optimism about a demand recovery in the second half of the year. The U.S. West Texas Intermediate crude ended the week at $65.61 a barrel. Yamini, thank you so very much for being with us. और चलते चलते अंत में हेडलाइंस एक बार देख लेते हैं. विदेशी निवेशकों ने मार्च के पहले 2 सप्ताह में भारतीय पूंजी बाजारों से 7,000 करोड़ रुपए निकाल लिए. 5 कंपनियां अगले सप्ताह अपने आईपीओ बाजार में उतारेंगी और ब्रेंट क्रूड 13 महीने के ऊंचे स्तर पर रहने के बाद इस सप्ताह के शुरुआत में लगभग $70 पर स्थिर रहा. That's all we have in this edition of Money Matters. Do join us at 6:30 p.m. at Market Mantra, where we bring you questions that you ask on mutual funds. Till then,
Goodbye.